Good afternoon, dear student. I Renu kushvah, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि हम न्यूमेरिकल मैथ्स में आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं, आज का टॉपिक भी हमारा वेरी आईएमपी टॉपिक है जिसका नाम है एनालिटिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हम अपनी ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके इनवर्स के अंदर सॉल्व करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरीके से ये डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, किस तरीके से ये अदर कोर ब्रांचेस में अप्लाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से लैप्लास और इनवर्स लैप्लास के अंदर सॉल्व किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो analysis of differential equation, this is the main headlines of today's lectures. Generally real world differential equation are not directly solvable. That's when we use numerical approximations. We are going to look at some simple ones to get a better understanding of the differential equation themselves. Differential equation contain the derivatives of unknown functions. Given some simple differential equations, we can sometimes guess at the form of the function, so we will work backwards from the solution to the differential equation. A typical linear equation is the relationship between temperature in Fahrenheit and Celsius. C is equal to 5/9 multiply f minus 32. ये हमने कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल अपना पहले मैथ्स में सॉल्व किया होगा इक्वेशन यूजिंग ऑक्टेव टू प्लॉट c comma f for f is equal to 32 212. Octave 8 is greater than f is equal to 32 ratio 1 ratio 212. Octave 9 is greater than plot f comma f upon 9 multiply by f minus 32. ये graphical representation हुआ. Clearly this function is linear. If this function was given as a differential equation, it would just be the derivative of c with respect to f. It is a constant function with this initial value. Formula is dc upon df is equal to 5/9 comma c 32 barabar 0. So if the differential equation is a constant function, the solution is a linear function. More complex function, the Poisson of an object s moving and constant, acceleration is given by st is equal to v0t plus 1/2 at square. ये इसकी exercise. A little more complex क्या होता है? The value of the differential equation is dependent on the value of the function. Let's look at the growth of bacteria. Bacteria reproduce using binary fission and double in number in each time frame, assuming they have enough food. So the change in the number of bacteria is dependent on the number of bacteria already present. Exercise है. This function is exponential. Its general formula is x of t is equal to x0 e की power kt, where x0 is the starting value and k is the growth factor. The differential function that gives us this function is dx upon dt is equal to kx with x0 is equal to x0. So testing this out, another population example. Population is not often based solely on population growth but also on prediction. Assume there is a population of animals x, they have a growth rate r that depends on their birth rate, है ना? What differential equation describe the change in population? Answer dx upon dt is equal to rx. More, a population is better model with two function. For the prey organisms x, growth is limited by resources. There is a maximum number of organisms maximum that can be maintained in an area. As they approach that number, their growth rates decrease linearly. This new information leads us to new differential equation. Formula is dx upon dt is equal to r bracket में 1 minus x upon maximum multiply by x. Notice that x approaches maximum, dx upon dt approaches 0. This function is called a logistic function. ये नीचे उसकी equations दी हैं. इस तरीके से ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं. This curve is called the S curve. The function is called the logistic function and also it's called the sigmoid function. It shows up in many different models. It is frequently used to model biological switching. ठीक है, इस तरीके से. But organisms do not tend to live alone. If they are prey, they live with predators. Now the growth of the prey x is affected by the number of predator y and the growth of the predator is affected by the number of prey. Now we have a system of differential equation that depend on each other. इसकी equations हैं. We cannot write a formula to express the solution of this system of equation. We could use numerical method to approximate a solution, but we cannot find one analytical
ये इक्वेशंस आ गई। फेस प्लेन एनालिसिस क्या होता है? वी आर गोइंग टू थिंक ऑफ द सोल्यूशन टू द इक्वेशन एज पॉइंट ऑन द वी comma small v plane. For example, if capital V is 5, 0.5 and small v is 0.5, what is the dv upon dt? dv upon dt फॉर्मूला आपको दिया है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दोनों के आंसर्स। ये उसकी कंडीशंस हैं, ये उसकी कंडीशन है, ये उसका ग्राफ है। एक्सरसाइज इनको भी आप कर सकते हैं। वी कैन लुक एट द साइमल्टेनियस ऑफ द फ्रिटजॉट face plane and organization. The apple on top shows the face plane along with the tangent lines. Click on a starting point to see how the system behaves. ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है, ये एक्सरसाइज है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं फिजिक्स में और अदर कोर ब्रांच में यूज करते हैं। कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में सीखी कि कहीं ना कहीं सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्यूशन ही नहीं हमारे क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, कहीं ना कहीं हम उनको जनरल और कोर ब्रांचेस में भी अप्लाई करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आपको इसके बारे में डिटेल में और डीप में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। हैव ए नाइस डे, प्लीज टेक केयर, स्टे एट होम।